Welcome to my channel Industrial Safety Classes and EHS. So today we will discuss a very important interesting topic, that is Gujarat Factory Rules 1963. So let's get started. So there's a 10 chapters are in Gujarat Factory Rules. Total rules, that is 113 rules are there in, and total forms which are included inside Gujarat Factory Rules, that is 37. So let's get over a look on all the chapters. So in Gujarat Factory Rules, there are all total 10 chapters. The chapter number 1 and chapter 2, that is inspecting staff. Chapter number 3, that is health. Chapter number 4, that is about safety. Chapter number 5, that is about welfare of the worker. Chapter number 6, working hours of adults. Chapter number 7, employment of young person. Chapter number 8, that is annual leave with wages. Chapter number 9, that is special provision. And chapter number 10, that is supplemental. So basically, being a part of safety person, we need to look overall 3 chapters, that is health, safety and welfare. So we will look firstly the chapter number 3, that is health. So चैप्टर नंबर 3, दैट इज हेल्थ. तो इसके अंदर जो रूल्स है फ्रॉम रूल दैट इज फ्रॉम 16 to 53. So one by one we will get to know all those rules. So rule number 16, which started in chapter number 3, that is health. Exemption under subsections 2 of section number 11. ये जो सेक्शन नंबर 11 है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जितने सारे प्रोविजंस एक्ट बनाए गए उसके अंदर ये सारे रूल्स गुजरात फैक्ट्री रूल्स के अंदर बनाए गए हैं. तो एग्जेम्पशन अंडर सब सेक्शंस लाइक उसके अंदर इस रूल के रिगार्डिंग जो रूल्स एक्ट बनाए गए थे फैक्ट्री एक्ट 1948 में, उसके अंदर जो छूट दी गई है, वो एग्जेम्पशन दिए गए, वो रूल नंबर 16 में बताया, क्लीनलीनेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स. That is, the act shall not apply to the class of description of factory or part of factory specified in schedule hereto, provided that they are kept clean, state by washing, sweeping, brushing, dusting, vacuum cleaning or other effective means. तो इसके अंदर ऐसे जो भी कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्रीज दिए गए शेड्यूल के अंदर, उन सब के ऊपर जो सेक्शन नंबर 1 के रूल बनाए गए हैं वो अप्लाई नहीं होता है. तो रूल नंबर 1 में यही है, जो शेड्यूल में कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्री दिखाई गई है, क्लीनलीनेस ऑफ वॉल एंड सीलिंग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है. सो लेट्स गेट ओवर रूल नंबर 17. रूल नंबर 17, रजिस्टर प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 11 विच कम्स फ्रॉम फैक्ट्री एक्ट 1948, उसके अंदर रूल नंबर 17 है, रिकॉर्ड ऑफ व्हाइट वॉशिंग एंड एटसेट्रा. द रिकॉर्ड ऑफ डेट्स ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, वार्निशिंग एटसेट्रा आर कैरिड आउट बी एंटर्ड इन रजिस्टर मेंटेन इन फॉर्म नंबर 7. तो जितने भी हम व्हाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वी विल मेंटेन इन फॉर्म नंबर 7. सो get move to rule number 17A. Sorry. Rule prescribed under subsection 1 of section 11 and section 112. तो ये 112 section and 11 that is prescribed under Factory Act 1948, और उसके अंदर में ये सब रूल बनाए गए हैं. 70 compound to be kept clean. The compound surrounding every factory shall be maintained in a sanitary and clean condition, free of rubbish, filth और debris. तो आपके जो फैक्ट्री के कंपाउंड्स है उसको क्लीन रखना है, और ये स्पेसिफाई किसके अंदर किया है, रूल नंबर 17A, कंपाउंड टू बी क्लीन, प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 112. नाउ सेक्शन नंबर 18, disposal of trade and waste. In this case of factory
wherein drainage system is proposed to be connected to public sewage system. Prior approval of the arrangement made